कंटेंट हैज टू बी कोरिलेटेड, दैट रेलेवेंस हैज टू बी देयर. आपकी वेबसाइट है लेकिन अगर सेल्फ रियलाइजेशन, सपोजिंग यू आर टारगेटिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स और आपके वेबसाइट पे वो टू से कंटेंट ही नहीं, कोर्स है ही नहीं, तो फिर वो कैसे रैंक करेगा? So why will Google rank your website for a certain keyword when you are having relevant content? That is what you have to give a lot of information related to that keyword. Only then it will. विजिटर आएगा तो उसको भी यूजफुल होना चाहिए, नहीं तो भी मीनिंग नहीं है. Mainly visitor के लिए ही यूजफुल होना चाहिए, because otherwise how why will Google rank? Google wants to give quality search results to the visitor. Basically it's the user who is in mind. It all starts from there and ends there. It is his requirement to know more about self-realization. That is why he is searching on the search engine. Correct. And Google will give only those websites to the user in the first page which are relevant, which is having content. That is the main correlation between. Otherwise, why will Google, even just because you are a famous organization, that's what I said, the search engines don't rank websites on the basis of their fame or on the basis of their balance sheets. It's only on the basis of the content. So what we have website content. Yes. So it's only on that too web page content. Web page. That every page should have that. If you have the similar content on every page, then you are basically targeting only one keyword or 2-3 keywords. तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कीवर्ड डिसाइड करने के बाद में That's the first thing. That's the foundation. That's why we took it up in the first session. तो इसमें क्या इतने सारे कीवर्ड्स हैं, अभी हम एनलाइटमेंट वर्ड डालेंगे तो उसमें भी इतने सारे कीवर्ड्स आएंगे, तो हाउ डू वी जज कि कौन-कौन से कीवर्ड हम तो शॉर्टलिस्टिंग कैसे करना है? शॉर्टलिस्टिंग अपने रिक्वायरमेंट के एंगल से करना है कि व्हाट इज द कीवर्ड विद व्हिच यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट एसोसिएटेड विद, और रादर के कौन से कीवर्ड से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, वो हाउ मच बोथ सी कौन से कीवर्ड से ये सब कीवर्ड्स है लाइक जिससे सर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू सेल्फ रियलाइजेशन. डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द नाउ लेट अस राइट लेट अस से मीनिंग and let us see the fourth. There is no fourth up, so meaning, because as it is it gets ended. See, it starts with the dictionary meaning basically, and see there is a PDF over here also where a detailed explanation must have been given. Now if I write enlightenment, right? Now enlightenment definition: art, thinkers, quotes, meaning, experience. So which one is more related to the content that you're already having? Because if you cannot change the whole content of your website, you are having that content, you find that it is necessary to relate to your organization, that is why you're having that content. So find out on which page you can target this keyword. Suppose in let's say thinkers. Yes, जैसे एनलाइटमेंट स्केड्यूल है और सेल्फ रियलाइजेशन स्केड्यूल, तो उन दोनों में से हम कौन सा चूज? वो स्केड्यूल अलग है ना. सी लेट अस स्केड्यूल हो, वीडियोस हो, व्हाटएवर. हाँ, see over here they are searching for quotes, then thinkers list, so the names of the people, those who they want to know people, those who are got enlightenment or they are what to say working on this topic, or see thinkers argued that chart quotes and their ideas. So this is something, it's a very general thing you can, because everybody who's looking for a topic on enlightenment, they want more and more ideas on that topic, they want to know more about that. So you can have this kind of a enlightenment thinkers thoughts and ideas, that can be your title. मैडम ये अगर बहुत सारे लोग ये टॉप पर है तो मैक्सिमम सर्च है, राइट? Yes. पर ये फिर भी ये तो फिर इसमें जो कंपटीशन है, हाउ डू यू, लेकिन सपोज ये कीवर्ड पे से 1 लाख वेबसाइट्स है या 50,000 वेबसाइट्स है, तो फिर वी आर कंपीटिंग विद दोस वेबसाइट्स फॉर दैट कीवर्ड. Yes, for that keyword you are competing with only those websites. तो इज इट गुड टू